अच्छा। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हाँ। अच्छा, एक दफ़ा मैं अपनी देख लूँ आ, क्या स्ट्रीमिंग सही हो रही है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कैजुअली। तो चलते हैं। अच्छा। आ, ठीक है। मुझे थोड़ी सी इसकी। ठीक है। मुझे थोड़ी सी इसकी। ठीक है। मुझे थोड़ी सी इसकी। अच्छा, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। ठीक है। मुझे थोड़ी सी इसकी। अच्छा, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। ठीक है। आप चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मेरा ख्याल है इशू इस वजह से जो उसकी माइक है उसमें उसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से गुड टू गो है। अब हमारा जो क्लॉक स्टार्ट होगी वो 1 आवर की स्ट्रेट होगी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सारी की सारी sorting करनी है, चाहे बबल सॉर्ट हो, चाहे मर्ज सॉर्ट हो, सिलेक्शन सॉर्ट हो। तो उसमें दो तीन और sorting टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। सो दिस वुड बी गोइंग टू 1 आवर स्ट्रेट। और थोड़ा सा हम वन नोट भी खोल लेते हैं। और जो हमारे टैब्स हैं जो हमने ओपन किए हुए हैं यहाँ पर, उन्हें यूज़ नहीं करना, वो हम बंद कर देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा i7 है, थोड़ा इशू करेगा। फिर से बंद कर देते हैं। अगर देखते हैं CPU एक्सटेंसिव ऐप्स कौन से हैं। टास्क मैनेजर है, क्लॉक है, सो क्रोम एंड ऑल दोज थिंग्स आर ओपन। चलें जी, स्टॉप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा पहला जो स्टार्ट होती है वो होती है बबल सॉर्ट से। अब बबल सॉर्ट हमारे पास, थोड़ी सी ब्राइटनेस हाई कर लेते हैं। बबल सॉर्ट हमारे पास क्या है कि लेट्स अज्यूम दिस इज our linked list, and there is some sort of data in here, and this is somehow connected to another, sorry, to another uh, node, and there is also some sort of data, and going for another uh, node. So there is, let's assume there is uh, 6. Okay, now what we are going to do, now add another, basically we are going to add another one, and let's assume it's 4. So basically what I'm going to do is, this is my ith index, but I'm going to do it in accordance with the linked list. So my current is basically the head is pointing to this node. The head is pointing to this node. I'm going to change the color. uh,
Okay, so right now my head is here and my current is here. Sorry for bad writing. I don't know how to use it. Okay, my current is here and previous is also pointing to the head. uh, Wait for a minute, I would use a mouse pad. Okay, so what I was saying is my previous is also pointing to this. Now what is going to happen is I would start my for loop, my outer for loop and my inner for loop. So my outer for loop starts from this node, and basically what it does is uh, basically the for loop isn't starting from any node. It's just the number of iterations which is going to happen, and then the for loop is also not pointing to anyone. In the case of arrays, it does, but in linked list it don't. So basically what is it is going to do is my current is going to check that if the current data is greater than current के next का data. ठीक है. So basically our current was here. Okay, and current का next जो सा है वो मेरा यहाँ पे है. So क्या मेरा current जो सा है वो current के next के data से बड़ा है? Current जो सा है नहीं. So what we are not going to uh, go through this for loop, and our exchanges were zero. That means so my head is pointing to head here next. How this is going to happen? Because it should start from here now. Head. I don't know what type of code is it. So if I'm going to put some values in there, uh, okay. So basically what I'm going to do is again run it. Okay, and enter the number of elements you want to insert. It 7364 7. Okay, sorry. It was asking how many elements. Okay, so basically there are 4 elements. 7364. Okay, 3467. Okay, it's doing its job. So we are going to iterate through it. So let's see. This is our code. So this line went. My head was pointing to which node? Head is equal to no head connection वाले है node tail is equal to head. Head मेरा enter elements. Okay. What is happening here? I don't know. Okay, my head is going there. That's a lot of things. Okay, so basically I'm going on there and check. Okay, previous equal to head. So okay, so if current का data is greater than current के next के data. No, it's not. So basically my for loop starts from here. अगर नहीं है तो मेरा else क्या करना, previous equal to current.
So previous was here. The previous is pointing to current. Okay. So this is not pointing to this now. Okay. Current is equal to current connect. Okay. Now my current is pointing to this node. Okay. So what is going to happen is this for loop is ending here, na? The inner loop. Now it is going again to iterate if my current is now pointing to here, na? So current is here, and basically I'm going to okay. So basically my current is pointing here now. Okay, and my previous was pointing to here. Okay, so basically now it's going to again iterate. हमारा करंट का डेटा जौन सा है वो करंट के नेक्स्ट के डेटा से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है. 6 is greater than 4. So basically what is going to happen is previous का जो next है वो करंट का next हो जाएगा. Now my previous was pointing to here. previous का जो next है करंट के नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब कि इसका जो नेक्स्ट है प्रीवियस का नेक्स्ट वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा. और करंट का जो नेक्स्ट है मतलब इसका जो करंट का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा. ये करंट है मेरा. I don't know what's happening in there. We're going to again iterate. So let's assume I'm going to take a picture. Where can I find a good picture, man? This is good to go. So I'm going to put this in there. Now let's assume this is the case, and I'm going to use. Okay. Now this is the case. Um, my head and current previous is equal to head. So previous is equal to head. This is our head, which is also start, and this is our current. Now if current का data is greater than current के next के data, current का data is greater than current के next का data. No, this isn't true, so we would go into else. Previous is equal to current. Now this previous
would point to current. Okay, okay, and then current is equal to current connect. So we have checked basically these two. Now we are going to check these two. Okay, so this is what is going to happen. Now this is again gonna go to our for loop, which is going to iterate basically 1 2 3 4 5 4 times size minus 1. So it is going again. If current का data is greater than current के next का data, current का data, now it is not. So basically again our previous will come here and our current will come here. And then what is going to happen is it is going to again if check if current का data is greater than current के next का data. So 12 45 49 59, it is already sorted, but what the fuck am I doing? So let's assume it's 59 and this is 49. Now I'm going to check current का data is greater than current के next का data. Yes, it is greater. Then what is going to happen is previous का next is equal to current का next. प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब कि प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा. प्रीवियस का जो नेक्स्ट है 59 वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा. बिल्कुल हो गया. आप देखेंगे करंट का जो नेक्स्ट है वो करंट का नेक्स्ट हो जाएगा. करंट का जो नेक्स्ट है करंट का जो नेक्स्ट है वो है 59. मतलब इस करंट का जो नेक्स्ट है वो करंट के नेक्स्ट हो जाएगा. करंट का नेक्स्ट तो नेक्स्ट नल है, तो इस करंट का जो नेक्स्ट है इस करंट का जो नेक्स्ट है वो करंट नल पॉइंटर हो जाएगा फिर तो ये. और जो प्रीवियस के नेक्स्ट है वो करंट हो जाएगा. प्रीवियस के नेक्स्ट है वो करंट हो जाएगा. वो प्रीवियस हमारा प्रीवियस के नेक्स्ट हो जाएगा. What the fuck is this, man? I don't know. I can't understand this code. This logic is kind of very. So I was inserting 7364. Okay. What I'm going to do is going to go to ChatGPT now. The only option left for me. And I'm gonna go to our for loop, which is going to iterate
basically 1 2 3 4 5 4 times to go. So I'm going to put this in there. Okay, I'm gonna go this there and then I am gonna say fix it. So where was even the size of that code? Can't understand. Okay, so it gave the size there, but what about there? Okay, then I'm going to search. Okay, there is some sort of different things happening in that code. Huh? Okay, so this is the original list. Now we are going again there. Okay, current is equal to head, so it was at new node data is equal to new node. Okay, so this was our insertion. This is count nodes, and then we are gonna go in there. So basically this time our current is starting from the head. There was something in main in there, which I can totally understand. The code I was doing in VS Code of linked list, there was some sort of different perspective. I didn't saw the. Okay, we are gonna go again in there with this code, or we are gonna ask him, give me a bubble sort linked list code for C++, no classes, no constructor, please. Okay, I told him not to don't use constructor, please. Okay, this looks good. This looks good. I'm gonna go in there. Um, okay, I'm gonna delete a lot of things. Sorry. I shouldn't have opened it. हेलो अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से? अच्छा, फाइनल लैब के पेपर के मतलब जो कुछ चीज़ें बतानी है वो लाजमी सुन लेंगे, पेपर इसी तरह का आएगा, ठीक है? पहला जो ये है कि आउटपुट आपका पूरा एक कोड लिखा होगा, उसका आउटपुट जनरेट करना होगा, ठीक है? वो आउटपुट लिखना होगा। सेकेंडली दूसरा ये कि एरर आएंगे, ठीक है? एरर्स पे बताना होगा कि एरर को करेक्ट करके लिखना है, ठीक है? और उसमें एरर क्या है। तीसरी चीज़ ये आएगी कि आप जितनी भी सॉर्टिंग है ना, जैसे बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और मतलब जितने भी कुछ सॉर्ट, जितने भी सॉर्ट थे, मैंने जितने भी लैब में पढ़ाए वो सारे जो है वो अरे लिखने हैं, लिंक लिस्ट पे नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है? उसके बाद आपका पेपर में सवाल इस तरह के आ सकते हैं कि पूरा कोड लिखने के लिए नहीं आएगा कि पूरा कोड लिखो आप लोग, जैसे जैसा आपके ट्री के कोड थे ना, काफी लंबे कोड थे, तो वो पूरे नहीं आएंगे। आ सकते हैं कि अगर लेफ्ट टू लेफ्ट इंसर्शन है तो उसका कोड ये सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो सही करके लिखे। उसी तरह राइट टू राइट की इंप्लीमेंटेशन लिखे, सिर्फ राइट टू राइट की वो 4-5 लाइन होती है ना, जिस तरह की रोटेशन वगैरह होती है, रोटेट करके कोड लिखना उसका, ठीक है? इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और ट्री के जो ग्राफ के जितने भी है ना, जैसे क्रिस्टल है आपका हो गया और रजिस्टर हो गया, और मतलब जितने भी 4 और पड़े हैं ना, वो सारे आएंगे और लिंक लिस्ट करने होंगे, ठीक है? तो इस हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी और कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है?
I don't know, yaar, what's happening, and then I'm gonna go for a break. I can't understand anything. ये रहा वो मैंने कह रहा था कि मैम जो सी कैलकुलस वाली है ना उसे असाइनमेंट है, तो मेरे तो जीरो लगे हुए थे, तो इमरान गया था असाइनमेंट दिया तो मैम ने नंबर चेंज कर दी। तो मुझे नहीं पता था तुम्हारे भी जीरो लगे हैं, तो सीन ये है कि किसी को खिलवा के मैम के ऑफिस में तो बोल दो कि जीरो लगेंगे, जाहिर सी बात है असाइनमेंट नहीं सही होगी। यानी आज कोई लास्ट डेट थी, पता नहीं क्या सिस्टम है, मैं तो गया नहीं था, तो मैंने तो खिलवा के जो है ना असाइनमेंट मैम को दिलवाई है। तो ये सीन है, नहीं मिल रही।
una cosa e l'altra. Io non ne cammino per me.
Okay, so we are back again and again going for the live stream. Sorry for that I gave up. Okay. Now we are going to again start with this code. Probably yes. It looks a lot better. So what I'm going to do is, okay, I don't need a swap. I do know what it is. I do know what is structure. I do know that basically clean up allocated memory. Okay, so you could have signed a temp to head and then easily. Okay, no problem at all. Okay, I know what it is happening here. Okay, so I'm gonna go like this. Okay, and I'm gonna raise some. Okay, first of all, this code is already sorted now. I'm gonna do a little change to it. Okay, so there I go with 12 and there I go with so basically I 13 12 and then 45 and basically do it 49 and do it 45. Okay, pointer 1 L pointer इज इक्वल टू नल पॉइंटर. ओके, स्टार्ट है हमारा, नल पॉइंटर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टार्ट हमारा किसी को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, अच्छा. अब पॉइंटर 1 का नेक्स्ट जो है वो नॉट इज इक्वल टू एल पॉइंटर. अच्छा, पॉइंटर 1 तो मेरा किसी को पॉइंट कर रहा है ना, तो नल पॉइंटर तो मेरा है नहीं. ठीक है, तो क्या होगा, चेक करेगा पॉइंटर 1 का डेटा पॉइंटर 1 के नेक्स्ट के डेटा से बड़ा है. बिल्कुल बड़ा है जनाब. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि नल पॉइंटर तो हमारा है नहीं. अच्छा, तो फिर क्या करना, इन दोनों को स्वैप कर देना. बेसिकली फिर क्या होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा. ठीक है, स्वैप कर दिया जनाब, स्वैप भी कर दिया. स्वैप इज इक्वल टू 1 हो गया, जो कि वैल्यू पहले 0 थी. अच्छा, अब मेरा ये जो वाइल लूप है ये चलता रहेगा. ठीक है, अब मेरा पॉइंटर 1 का नेक्स्ट, क्योंकि मेरा एल पॉइंटर तो अपडेट ही नहीं हुआ, एल पॉइंटर मेरा अपडेट नहीं हुआ, एल पॉइंटर भी मेरा नल पॉइंटर पे ही है. तो क्या होगा, चेक करेगा पॉइंटर 1 का जो डेटा है, क्योंकि अब बेसिकली मेरा जो पॉइंटर 1 का नेक्स्ट है वो बदल गया, दोनों स्वैप हो गए ना. तो अब मेरा पॉइंटर 1 क्या है, ये क्या मेरे पॉइंटर 1 का डेटा पॉइंटर 1 के नेक्स्ट के डेटा से बड़ा है? नहीं जनाब, नहीं बड़ा. तो मेरा पॉइंटर 1 यहाँ पे आ जाएगा. पॉइंटर 1 का डेटा क्या मेरे पॉइंटर 1 के नेक्स्ट के डेटा से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है. दोनों को स्वैप कर दो तो 45 49 हो जाएगा. और मेरे ख्याल से जब मैं इसको मिटाऊँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आ जाएंगी. ठीक है, तो अब चेक करना,